Hello everyone. So welcome to the second session of quadratic equation. We are into LMR, that means last minute. You can say last minute, last month, or last moment revision, whatever you feel like. So we are into the second session. So in the first session, we understood what is quadratic equation, and based on that, we solved few PYQs, that means past year questions. So now we are going to understand uh, the methods uh, to solve the quadratic equation. That means to find out the value of the variable, which is generally x. So there are three methods which we are going to learn, out of which the first method, an important method, which we will be using throughout our life till the time we are studying, that is factorization method, right? This chapter, again I'm telling you, this chapter is going to play a very important role. I'll tell you one thing, this chapter is also there in JE mains. If you are going to take 11th standard in the next year, if you're planning to take science, all right. Now let's begin with factorization method. First I will make you understand the steps which are there for factorization method, and then we will solve few questions, few PYQs and few important questions which are there. Okay, so let's begin factorization method. So what is factorization? All right, so we know that quadratic equation is ax square, this is a standard form, plus bx प्लस सी इक्वल टू जीरो. बेसिकली अगर आप टेक्स्ट बुक देखो तो टेक्स्ट बुक में दो ही स्टेप्स दिए होते हैं जनरली. सो अगेन आई विल से देयर आर ओनली टू स्टेप्स. आई विल नॉट से दैट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहा हूँ. स्टेप नंबर वन इज यू ऑलवेज फाइंड आउट ए into c, that is the value of ac. You first find out the value of ac. Now there are two possibilities. One is ac is positive. That means अगर मान लो 2 into 3 है, a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 3 है, then it is 2 into 3, that is 6. So the first possibility is ac is positive, and the second possibility is ac is negative, right? Now जब ac positive है, okay, then again there are two possibilities, b is positive or b is negative. Actually itne let us not get into all the details right now. Let me make it very simple. Then what you are going to do is factors whose addition is equal to b. ऐसे factors ढूंढने जिनका addition is equal to b होता है, right? जब AC negative होता है, then you will find out factors whose subtraction is b. Subtraction is equal to b, right? So in the first case अगर positive है तो addition होना चाहिए, और in the second case if it is negative, AC का वैल्यू नेगेटिव, तो AC इज वेरी वेरी सिंपल. AC जो घर पे लगता है, AC पहले निकालो, राइट? सो AC का वैल्यू निकालो. इफ इट इज पॉजिटिव, फैक्टर्स हुज एडिशन इज B. इफ AC इज नेगेटिव, फैक्टर्स हुज सब्ट्रैक्शन इज B. थर्ड, फैक्टराइज करो उसको फिर. ओके, कैसे करते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. Let's have an example. This example is not from the boards. I have taken this example. Okay. So 5m square is equal to 22m plus 15. कुछ भी काम करना है ना, तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax square plus bx plus c. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं. 5m square minus 22m
माइनस 15 इज इक्वल टू 0. राइट, जैसे मैंने अभी अभी कहा था, यहाँ पे पहले AC का वैल्यू निकालो. AC मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 15, माइनस 15 इज माइनस 75. फाइंड आउट द फैक्टर्स. अगर ये निगेटिव है, अगर ये AC निगेटिव है, फाइंड आउट द फैक्टर्स whose subtraction is B. राइट, तो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन देखना है. पहला वाला तो देखो 1 and 75, क्या ये सब्ट्रैक्शन अपने को 22 देता है? नो. देन द सेकेंड, 2 से नहीं होगा, 3 से. 3 and 25, क्या इसका सब्ट्रैक्शन हमको 22 देगा? द आंसर इज yes. 25 minus 3 is 22, but we require minus 22, so it will be minus 25. And so अगर आप इसको ठीक से देखो, 3 into minus 25 is again minus 75, and minus 25 plus 3 अगर करें तो you get minus 22. So you have to look at this. So again, if AC is positive, look for addition. AC is negative, look for subtraction. So if I go for it, 5m square. अब जो अगर और डिटेल में जाना है तो इसका जो साइन है बड़े वाले नंबर को देना है. तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 25 है. सो माइनस 25m. अगर ये प्लस होता तो आई वुड हैव टेकन 25 एज प्लस एंड 3 एज माइनस. ओके, सो दिस विल बी प्लस 3m माइनस 15. रिमेंबर दैट हमने इक्वेशन में एक्चुअली कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, उसका वैल्यू इट रिमेन्स द सेम, because minus 25 plus 3 is minus 22. We have just changed the way we represent the equation. Now you have to take two terms, first two terms together and the last two terms together. Okay, so from the first two terms you can see 5m is the common term. 5m is the common term. In that case this will be m minus 5. From the last two terms you can see m minus 5 is equal to 0. Okay, now you can see this is common in both the terms. There are two terms now, प्लस के पहले वाला एक टर्म एंड प्लस के बाद वाला एक टर्म, एंड दोनों में ये कॉमन है. अगर ये कॉमन नहीं आया तो इसका मतलब देयर इज सम मिस्टेक दैट यू हैव डन. यू हैव टू रीचेक द क्वेश्चन और द सॉल्यूशन दैट इज देयर विथ यू. सो m minus 5 ये तो कॉमन है. इधर क्या आएगा? दिस विल बी 5m plus 3. I'll take m minus 5 as common. Inside the other bracket what remains is 5m plus 3. 5m from the first term and 3 from the second term. You can see 5m from the first term and plus 3 from the second term when we take m minus 5 common. Right? When the product of two numbers, इसका भी solution निकालना है. यहाँ पे अभी factorize करके, यहाँ पे the last step is once you factorize it, solid solution निकालना है. We are at the last stage now, right? तो कैसे किया जाता है? This is 5m plus 3 is equal to 0 और m minus 5 is equal to 0. क्यों ऐसे होता है? देखो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, there is one number over here, one number over here, and दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आया है. तो 0 जब आता है तो इसका मतलब एटलीस्ट वन नंबर हैज टू बी 0. दैट मीन्स आइदर द फर्स्ट टर्म इज 0 और द सेकेंड टर्म और ब्रैकेट इज 0. हेंस हम लोग ने लिया m 5m plus 3 is equal to 0 और m minus 5 is equal to 0. That means 5m is equal to minus 3 और m is equal to 5. That means value of m is minus 3 upon 5 or value of m is equal to 5. So there are two solutions for this. Important part of this solution is this. And if you remember in the last class, इसका मतलब क्या है आप खुद भी अपना आंसर चेक कर सकते हो फिर से. अगर मतलब बहुत ही वेरीफाई करना ही है हमको तो m का वैल्यू 5 पुट करके देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं, एज वेल एज m का वैल्यू -3/5 पुट करके देख लेना सही आता है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. Okay, this is the second question which was asked in March 2022. Okay, so the equation here is x square
minus 15x plus 24 equal to 0. I will first find out AC. इधर कितना है? 1 है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1. 1 into 24 पॉजिटिव है, that is equal to 24. 24 के factors which will now, because 24 is positive, I will see for addition जो 15 देगा. So if I take 1 and 24, first factor is direct simple, 1 तो होता ही है, नहीं होता है because 24 plus 1 तो हमेशा फैक्टर्स में आएगा ही, बट उनका अगर एडिशन करो तो 1 plus 24 25 हो रहा है. सेकेंड ऑप्शन इज 2 and 12. 2 into 12 is 24. क्या इनका एडिशन 15 होता है? नहीं. देन 3 into 8, क्या इनका एडिशन अपने को 15 मिल रहा है? द आंसर इज नो. देन 4 into 6, there is no again. 5 6 no. I think there is some mistake in this problem. Let me have a check with this problem and then we will solve this problem. No, let me have a look at this problem. So just give me some time, I'll come back to that problem. Here, coming back to this, x square plus x minus 20 is equal to 0. The value of AC, 1 into minus 20 is equal to minus 20. Now, because it is minus 20, I will look for subtraction. पहला फैक्टर क्या आएगा? 1 and 20. क्या इसका subtraction अपने को 1 मिलता है? इधर 1 चाहिए अपने को. The answer is no. Then 2 into 10. Is the subtraction equal to 1? No. Then 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो सकता. 4 and 5. क्या इसका subtraction अपने को 1 देता है? Answer is yes. इसका साइन बड़े वाले नंबर को जाएगा और इसका ऑपोजिट साइन छोटे वाले नंबर को. यू कैन सी इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस 20 आता है और इनका अगर एडिशन करते हैं तो अपने पास माइनस 1 आता है. हेंस माय सॉल्यूशन बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 is equal to 0. फर्स्ट टू नंबर्स एंड लास्ट टू नंबर्स. अभी कभी कभी बच्चे सवाल ये पूछते हैं कि सर क्या मैं ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x पहले लिखूंगा प्लस 5x बाद में लिखूंगा एंड माइनस 20 लिखूंगा तो भी आंसर आएगा? द आंसर इज यस. वी विल सॉल्व. इफ योर दिस इज योर डाउट वी कैन सॉल्व दैट डाउट. सो लेट मी फर्स्ट सॉल्व दिस. यहाँ पे x कॉमन होगा. इन द ब्रैकेट व्हाट आई विल गेट इज x plus 5. From the remaining two terms, I can take minus 4 common. In the bracket, I'll get x plus 5. Remember that पहला वाला bracket अगर x plus 5 आया है, तो दूसरा वाला bracket भी x plus 5 ही आएगा. That will not change, right? So you have to understand that it will not change. Okay. Okay, now that means here you can see this is common. X plus 5 is common. Now this will be x plus x minus 4 into x plus 5 is equal to 0. The meaning of this is x minus 4 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. That means x का वैल्यू अगर 4 आएगा या फिर x का वैल्यू क्या आएगा? That is minus 5. Now your question was कि अगर ये 5x बाद में और minus 4, see unless you change the sign, अगर sign change कर रहे हो तो problem हो सकता है, but if you are not changing the sign there is absolutely no problem. You don't have to worry about it. So because the sign is not changed, let me tell you how it gets solved. अगर मैं x कॉमन लेता हूँ फर्स्ट टू टर्म्स तो क्या आएगा? x minus 4. अगर रिमेनिंग टू टर्म्स से मैं 5 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आएगा? अगेन x minus 4 is equal to 0, right? That means ब्रैकेट में x plus 5 into x minus 4 is equal to 0, which means x plus 5 is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0.
which means x is equal to -5 or x is equal to 4. Can you see? आंसर कुछ भी करो आपको सेम ही आएगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ सकते हैं, right? So only thing is you will not change the sign. Agar if you are changing the sign, then we are helpless, we cannot do anything about it. Okay, just a minute, let me check where the question is. So there was a small mistake over here. Let me make the correction. This was not minus 24, it was plus 54. Hence we were getting the wrong solution. So I'll take this out completely. Let us try now once again. Okay. So what is the question? This is the question. So x square minus 15x plus 54 is equal to 0. So what is the factor? 1 into 54, right, is equal to 54. Now because it is positive, we will have to look for addition, which will give me 15. Okay, so the first safest thing is 1 and 54. Iska addition to definitely 15 nahi aayega. Then it will be 2 and 27, again no, right? Then it will be 3 and 1 18 is the addition. Subtraction 15 aa raha hai, lekin this time I don't want the subtraction. Okay, now 4 से डिवाइड हो रहा है, नो. 5 से डिवाइड, नो. 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 into 9. Is the addition equal to 15? This time it is yes, but because the sign is negative, over 15 का sign negative है, so I'll take this as -6 and -9. Let us check. -6 into -9 is +54, और अगर उसको एडिशन करते तो मुझे -15 मिलने वाला है. Hence मैं इसको स्प्लिट करता हूँ 15 को. I'm going to split this as -6x -9x plus 54. Okay, first two terms, let us take first two terms and the last two terms. So if I take first two terms, x is the common term, it will be x minus 6, then minus 9 x minus 6 is equal to 0. That means x minus 6 into x minus 9 is equal to 0. That means x minus 6 is equal to 0 or x minus 9 is equal to 0. That means the two values of x are x is equal to 6 or x is equal to 9. These are the two values. We have solved this. Let us try this March 2019 question. X square plus 8x plus 15. Again similar to the previous one. यहाँ पे 1 into 15. The product is 15. AC का value निकाल लिया, right? My equation is x square plus 8x plus 15 is equal to 0. All right. Now 15 के factors 1 and 15. Now remember that because it is plus, I will look for addition. Addition क्या होना चाहिए? 8. 15 plus 1 is 16. So it is not equal to 8. 2 से divide नहीं होगा. 3 से. 3 into 5 is 15, and this time 8 is also plus, so plus 8 into plus 5 is plus 15, and उनका अगर एडिशन करते हैं तो मुझे 8 मिलता है. Hence यहाँ पे x square plus 3x plus 5x plus 15 is equal to 0. Now from the first two terms, I'll split it in two parts. X
into x plus 3 plus 5 into x plus 3 is equal to 0. This will be x plus 5 into x plus 3. That means x plus 5 is equal to 0 or x plus 3. That means x is equal to minus 5 or x is equal to minus 3. Now this is something different. This is one of the, you can say, मतलब इससे ज़्यादा difficult कुछ हो नहीं सकता. This is one of the difficult question. So first of all, let me write the question. This is one of the question from the textbook. So root 2 x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. So my product AC root 2 multiplied by 5 root 2. Remember 5 है. Okay, root 2 into root 2 is 2, which is equal to 10. This is very, very, very important. 10 hai. All right. So we will be looking, because it is plus 10, we will be looking for the factors which will give us 7. यहाँ पे 7 है ना, तो कितना होगा 1 and 10. पहला तो फैक्टर 1 and 10 का एडिशन हमको 11 मिलता है, सो 7 नहीं हो पाएगा. Second option is 2 and 5. So you can observe 2 and 5, the total is 7. Okay. Now this is very, very, very important. So root 2 x square plus 2x plus 5x plus 5 root 2. ठीक है. जनरली हम लोग ये दो दो टर्म्स करके यही से हम लोग कॉमन लेते हैं. इफ यू लुक एट ऑल द क्वेश्चंस, यहाँ से दो दो टर्म करके हम लोग कॉमन पार्ट निकालने की कोशिश करते हैं. यू लुक एट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव सॉल्व्ड. यहाँ पे मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो बिकॉज दिस इज रूट 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बट ये जो 2 है, दिस 2, I can write this 2 as root 2. Now this step is not important, मतलब लिखना जरूरी नहीं है, but this is for your understanding I am writing, because if I solve it directly you might not understand. So मैंने 2 को root 2 into root 2 लिख दिया plus 5x plus 5 root 2 is equal to 0. Now let us make two parts. This is the first two terms and this is the next two terms. Now root 2x, if I take common, inside the bracket x plus root 2. All right, because root 2 x is common, root 2, और इसमें से एक x निकलेगा बाहर. बचे हुए टर्म्स में से 5 I will take common. Inside the bracket it will be x plus root 2 is equal to 0. Remaining part is very simple. यहाँ पे आएगा root 2 x plus 5 and x plus root 2 is equal to 0. So root 2x plus 5 is equal to 0, और हमेशा और लिख रहा हूं मैं. So root 2x is equal to minus 5 और x का वैल्यू हो जाता है minus root 2. Okay, now which means the value of x is minus 5 upon root 2 और x का वैल्यू है minus root 2. Right? That's it for this class, because in the next class we are going to learn the new method, the second method, that is solution of a quadratic equation by completing the square. As I said, we are going to learn 3 methods. First method is factorization method, यहाँ तक हम लोग कर रहे थे, right? In the next class we are going to learn with the new method, and
Very soon I'll be coming up with the next video. All right, so that's it for today. In case if you are solving your questions and if you have any doubt from not only from this chapter, if you have from any other chapter, this is the mobile number which I'm giving you. You can click the photograph of the question and send it on this number, and I'll solve the question for you. All right, thank you very much. Bye bye.